Welcome students, this is lecture number 3 of statistics chapter index number. We are already done with unweighted, that is simple, methods for computing index number, aggregative and price relative, and under weighted we are doing aggregative, जिसके अंदर हम लास्ट ईयर पास कर चुके हैं. मूविंग टू फिशर्स. What Fishers has done? ये मेथड को बेस्ट मेथड कहा जाता है. This method is considered as the ideal method for computing index number, the best method. Why? एक तो ये सिर्फ प्राइजेस को नहीं, ये क्वांटिटीज पर फोकस करता है. फिशर्स क्वांटिटीज पे फोकस करता है. क्वांटिटीज के साथ सिर्फ बेस ईयर क्वांटिटी या सिर्फ करंट ईयर क्वांटिटी नहीं, दोनों ईयर्स की क्वांटिटी लेते हैं. दैट मीन्स सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 इंटू Q1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू Q1 का होल अंडर रूट इंटू 100. अगर आप ध्यान दें, लास्ट ईयर्स इंटू पास्ट ईयर whole under root into 100. I think I'm clear with this. Let's do one question of Fishers, then we'll see why it is known as the best method for computing index number. Write down the question. On the basis of following information, on the basis of following information, calculate ideal index number. Ideal means the best one, which is nothing but the Fishers. I am writing the question on the another board so that I have the complete available space for solution. Commodity. We have 5 commodities: A, B, C, D, E. Base year, price, क्वांटिटी. और ये आपको पता है, अगर वैल्यू या एक्सपेंडिचर गिवन हो तो आपको प्राइस या क्वांटिटी कंप्यूट करनी पड़ेगी. करंट ईयर, प्राइस एंड क्वांटिटी. 6, 2, 4, 10, 8, 50, 100, 60, 30, 40, 10, 2, 6, 12, 12, 56, 120, 60, 24 and 36. Let me check the data once. 6, 2, 4, 10, 8, 50, 100, 60, 30, 40, 10, 2, 6, 12, 12, 56, 120, 60, 24 and 36. And you need to compute P01, that is prices index number, using the ideal one. Let's start with the solution now. I hope आपने question note down कर लिया. I hope you have noted down the question. Now P0, prices of base year 6, 2, 4, 10, 8. Q0, quantity of base year 50, 100, 60, 30, 40. P1, prices of current year 10 to
6, 12, 12. Q1 quantity of current year 56, 120, 60, 24, 36. Method बोला है ideal method. Ideal means Fisher. P01 using Fisher's method is sigma P1 Q0 upon P0 Q0 1000, sigma P1 Q1 by sigma P1 P0 Q1 1101 whole under root into 100. P1 Q0 P1 Q0 500, 200, 360, 360, 480. P0 Q0 P0 Q0 300, 200, 240, 300, 320. P1 Q1 P1 Q1 560, 240, 360, 288, 432. And the last is P0 Q1 P0 Q1 6 into 56, 2 into 120, 240, 4 into 60, 240, 10 into 24, 240, 36 into 8, 288. This is P0 Q1. Let's do the summation. 1900 P1 Q0, 1360 P0 Q0, 1880 is P1 Q1, 1344 is P0 Q1. I am giving you time to note down this. Take 1 minute till I verify the calculations. Speed up 30 more seconds. The calculations are up to the mark.
Now let's solve it. P01 is equal to whole under root of P1Q0 1900, P0Q0 1360, this is last pairs, P1Q1 1880, P0Q1 1344, this is pasties into 100 outer में 1900 by 1360 1.39 into 1880 divided by 1344 1.39 1900 multiply by 1880 divided by 1360 divided by 1344 is 1.9542 का whole under root. 1900 into 1880 divided by 1360 divided by 1344 is 1.9542 का under root is 1.3979 का under root done. 4 डिजिट तक सॉल्व करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है तो हमें 2 डिजिट तक ही आंसर आएगा. अंडर रूट 4 डिजिट तक सॉल्व करेंगे तभी हमारा आंसर 2 डिजिट तक पहुंचेगा, द नेट आंसर. हाउ टू फाइंड अंडर रूट, यू नो दैट. इफ नॉट, वी हैव डन दैट इन measure of dispersion, the trial and error method, and the actual method we have done in correlation. Now last पेयर फिशर मेथड को बेस्ट मेथड क्यों कहा जाता है, आइडियल मेथड क्यों कहा जाता है? राइट डाउन वन क्वेश्चन इन योर कॉपी. राइट डाउन वन क्वेश्चन इन योर कॉपी. Why Fisher's method is an ideal method? Why Fisher's method is an ideal method? फिशर मेथड को आइडियल मेथड क्यों कहा जाता है? राइट डाउन. देर आर 4 रीजंस फॉर दैट. 4 रीजंस हैं इसके. The formula is based on geometric mean. The formula is based on geometric mean of last pair method and past trees method. The formula is based on geometric mean of last pair method and geometric method, comma, which is considered the best average to construct index numbers. Which is considered to be the best average. Which is considered to be the best average for constructing index numbers. There is arithmetic mean, median, mode, geometric mean, harmonic mean. Geometric mean बेस्ट होता है और बेसिकली फिशर मेथड लास्ट पेयर और पास्ट का ज्योमेट्रिक मीन ही है. कैसे? आई जस्ट प्रूव इट. यू नीड नॉट राइट इट, आई एम जस्ट प्रूविंग इट. सी P01 is equal to summation of दिस इज द फॉर्मूला वी हैव डन. फिशर का यही फॉर्मूला किया ना हमने. मैं 100 को अंदर भेज देता हूं.
अगर 100 को अंदर भेजना है तो वो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर भेजना है ना, तो दैट वुड बी 100 का स्क्वायर। हंड्रेड का स्क्वायर मीन्स 100 इंटू 100, दैट कैन बी रीरिटन एज 100 का स्क्वायर, मैंने 100 इधर डाल दिया, 100 इधर। और अगर आप ध्यान दें, दिस इज द फॉर्मूला फॉर लास्ट पेयर्स एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर पास्ट ट्री। बेसिकली फिशर ने लास्ट पेयर और पास्ट ट्री का स्क्वायर रूट ले लिया है, अंडर रूट ले लिया है। लास्ट पेयर का आंसर इंटू पास्ट ट्री का आंसर, इसका अंडर रूट। आपने पूरा फॉर्मूला लगाया था, बट अगर पेपर में लास्ट पेयर और पास्ट ट्री दोनों पूछे जा रहे हैं, जो हम अभी अगले क्वेश्चन में करेंगे इसी लेक्चर में, अगर लास्ट पेयर और पास्ट ट्री दोनों पूछे जा रहे हैं तो यू नीड नॉट सॉल्व द एंटायर वैल्यू, यू जस्ट टेक द अंडर रूट ऑफ लास्ट पेयर एंड पास्ट ट्री, दैट इज द easier version. So the first reason why Fisher is known as ideal method, because it takes the geometric mean of last pair and past tree. Next, number 2, it considers both base year and current year quantities as weights. Second reason, it considers both base year and current year quantities as weights. लास्ट पेयर में Q1 को इग्नोर किया जाता है, पास्ट ट्री में Q0 को इग्नोर किया जाता है, फिशर में दोनों में से किसी को इग्नोर नहीं किया जाता। सो इट कंसीडर्स बोथ बेस ईयर एंड करंट ईयर क्वांटिटीज एज वेट्स, full stop, continue. So it avoids the limitations of, it avoids the limitations of last pair and past trees method for the construction of index number. It avoids the limitations of last pair and past tree method of construction of index number. Third, why Fisher is the best method? Third, it satisfies the time reversal test. It satisfies the time reversal test. अब ये टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता है? बेस ईयर को करंट ईयर लो, करंट ईयर को बेस ईयर लो, आंसर सेम आ जाएगा। मींस 10% इन्फ्लेशन आया है 3 सालों में, तो अगर हम रिवर्स कर दें टाइम को तो 10% डिफ्लेशन हुआ है इस साल से पिछले 10 सालों से इन कंपैरिजन। सो इट सेटिस्फाइज टाइम रिवर्सल टेस्ट, मतलब बेस ईयर कन्वर्ट टू करंट ईयर, करंट ईयर कन्वर्ट टू बेस ईयर, द आंसर, द पॉलिसीज framed would be same. Fourth, it satisfies factor reversal test. It satisfies factor reversal test. क्वांटिटीज को वेट मानो तब भी आंसर सेम, प्राइस को वेट मानो तब भी आंसर सेम। मीन्स इफ प्राइजेस आर शिफ्टेड to quantities and quantities are shifted to price, the answers will remain same. Factor reversal test, factor को रिवर्स कर दिया गया है। सो फिशर को बेस्ट मेथड क्यों कहा जाता है? नंबर 1,
ये मेथड ज्योमेट्रिक मीन पर बेस्ड है, इस वजह से क्योंकि फिशर मेथड लास्ट पेयर और पास्ट ट्री का ज्योमेट्रिक मीन रहता है। 2, इसमें दोनों क्वांटिटीज पर फोकस किया जाता है, Q1 एंड Q0, अनलाइक फिशर एंड पास्ट ट्री एंड लास्ट पेयर। 3, it satisfies the time reversal test. 4, it satisfies the factor reversal test. Cool? Read out all the 4 points. Speed up. 4 points को अच्छी तरह एक बार रीड आउट कीजिए। Then we'll move to the new question. So let's complete our weighted aggregative method. This is the last question जिससे हमारा weighted aggregative method complete होगा. The question is, from the following data calculate price index number using weighted aggregative method. अब weighted aggregative method में 3 आते हैं, last pair, past tree and fisher. तो हम तीनों compute करेंगे. Commodity ABCD, base year P0, this is V0, quantities given नहीं है. Current year V1 क्वांटिटी, V1 गिवन है, मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर गिवन है, तो हम P1 निकाल लेंगे एंड क्वांटिटीज आर तो गिवन ऑलरेडी, क्वांटिटीज क्वेश्चन में गिवन है. सो वी डू नॉट हैव Q0 एंड वी डू नॉट हैव P1. वी नीड टू कंप्यूट इट फर्स्ट. गिविंग यू 1.5 minute to complete, to note down the question, then we'll start with the solution. Note down the question. Thirty more seconds, speed up. Now let's start with the solution. हमें चाहिए P0, Q0, P1, Q1. Q1 गिवन है, Q0 नहीं, P0 गिवन है, P1 नहीं. So solution, as V0 is given, comma, we will compute Q0 first, that is V is equal to P into Q, that means Q is equal to V by P. Similarly, V1 is given, comma, we will compute P1 first, that is V is equal to P into Q, that is P is equal to V by Q. Value stands for expenditure, V stands for expenditure. So now commodity A, B, C, D.
P0 20, 50, 40, 20. Q0, it's volume divided by price. 160 by 20. 8. 500 by 50. 10. 600 by 40. 15. 400 by 20. 20. Now P1, volume divided by quantity. 240 by 6, 40. 300 by 5, 60. 750 by 15, 50. 500 by 25 is 20. I hope you are getting what I am doing. हमें P0 Q0 मिल गया, P1 निकाल लिया, Q1 गिवन है 6, 5, 15, 25. Eight, 10, 15, 20 and 6, 5, 15, 25. Perfect. Now उन्होंने पूछा है weighted aggregative method, तो तीनों आएंगे. The first is, let it be here, the first is using last pairs method. P01 is equal to sigma P1 Q0 upon sigma P0 Q0 into 100. P1 Q0, P1 Q0, 40 into 8, 60 into 10, 50 into 15, 20 into 20. This is P1 Q0. What next? P0 Q0. What is P0 Q0? Volume of base year, expenditure of base year. क्वेश्चन में गिवन है, आप दोबारा निकालना चाहें निकाल सकते हैं. P0 Q0 क्वेश्चन में गिवन था, मैंने एज इट इज लिख ली है. अगर आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा. Summation $2070 and P0 Q0 is 1660. 2070 1660 according to the formula. 2070 by 1660 into 100, 124.70. ये आपका लास्ट पेयर मेथड का आंसर आ चुका है. Now what about past G? Using past G's method, P01 is 1101. P1 Q1, P0 Q1, what is P1 Q1? V1 वॉल्यूम 1 क्वेश्चन में गिवन है. अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, मैं एज इट इज लिख रहा हूं. इफ यू वांट टू यू मे, वही आंसर आएगा. देन P0 Q1,
P0 Q1, 20 into 6 120, 50 into 5 250, 40 into 15 600, 20 into 25 500. This is 1790. This is 1470. Putting into the formula, 1790 by 1470 200 is equal to 121.77. Third, using ideal method, that is Fisher's method, one thousand ग्यारह सौ एक into 100. Now, I have a trick for this. Now, a common solution, पहले आप डिवाइड करो, फिर डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, रूट करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, और न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो, दोनों को डिवाइड करो, रूट करो, आंसर निकालो. बट द रेगुलर आंसर, द शॉर्टकट वुड बी लास्ट पेयर इनटू पास्ट ईयर, क्योंकि उसी का तो ज्योमेट्रिक मीन है. 124.70 इंटू 121.77, दैट्स इट. इंटू 100 नहीं आएगा क्योंकि वो 100 अंदर जा चुका है, हमने प्रूव भी किया था. फिशर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर एंड पास्ट ईयर. तो लास्ट पेयर का आंसर इंटू पास्ट ईयर का आंसर इंटू अंडर रूट. तो पिछले सम में हमने ऐसा क्यों नहीं किया? पिछले सम में हमने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें हमने लास्ट पेयर पास्ट ईयर का आंसर निकाला ही नहीं था. इसमें तो लास्ट पेयर पास्ट ईयर का आंसर आ चुके हैं. आंसर 124 और 121 के बीच में रहेगा, से 122.68. आंसर 121 और 124 के बीच में रहेगा, से 122.68. Let's see exact answer. 123.23. This is the answer of Fisher's. This is the answer of past year and this is the answer for last year. अंडर रूट निकालने का टाइम कम है तो आप अप्रॉक्सीमेट फिगर्स लिख सकते हैं. टेक योर टाइम, कंप्लीट योर सम. Speed up, students, 30 more seconds. Now moving to
theory question, page 207, page 207, question number 3, page 207, question number 3. What are the desirable properties of the base period? जो हम बेस पीरियड लेते हैं, बेस ईयर लेते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? While selecting the base period, certain factors should be considered. Discuss. बेस ईयर वो होना चाहिए जो फ्री फ्रॉम फ्लक्चुएशंस हो, जैसे कि उस साल डीमोनेटाइजेशन ना हुई हो, उस साल जीएसटी ना आया हो, उस साल कंट्री में कोविड-19 जैसा कोई इम्पैक्ट ना हो, उस ईयर इंडिपेंडेंस ना मिली हो, उस साल बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक या फेमाइंस ना हुए हो, कोई ऐसा ईयर जिसमें फ्लक्चुएशंस कम से कम हो और करंट ईयर से बहुत ज़्यादा दूर भी ना हो. फर्स्ट, the base period should have the following properties. 1. The base year should be normal year in which extraordinary events such as earthquake, flood, war, elections should not have occurred. 2. The period should not be too far in the past, as comparison cannot be done with such a base year because policies, economic and social conditions change with time. Third, not fourth, third, base period should be updated periodically. बेस ईयर बहुत दूर नहीं होना चाहिए करंट ईयर से. बेस ईयर में कुछ नेचुरल और आर्टिफिशियल मैन मेड चेंजेस नहीं आने चाहिए, जैसे कि अर्थक्वेक नेचुरल, डीमोनेटाइजेशन मैन मेड, और बेस पीरियड पीरियोडिकली अपडेटेड हो जाना चाहिए. Thus we can conclude that while selecting base period, certain factors should have been considered. Lecture 3, we have completed our weighted aggregative method. The question for practice is, not R, is only one question I am giving you for practice. Page 201, example 4. Page 201, example 4 का third part. This is for practice. Bye bye, take care. Namaste.